discuss the same. Friends, liability to pay in tax. I will take 10 minutes to cover this topic. ये टॉपिक देखने में बहुत बड़ा है, ये टॉपिक देखने में बहुत बड़ा है, बट ट्रस्ट मी दिस इज कॉमन सेंस टॉपिक. कि एक एक कंपनी है, मैंने आपको आज भेज दिया, 28 जून 2020 को मैंने एक कंपनी मिस्टर एक्स को भेज दिया. सो 28 जून के पहले कौन इसके डिमांड, इसकी 28 जून के पहले के ट्रांजैक्शंस का कोई डिमांड आता है तो कौन लायबल होगा? 28 जून के बाद के ट्रांजैक्शंस का डिमांड आता है तो कौन लायबल होगा? तो लेट्स डिस्कस. 28 जून को मैंने आपको मेरी कंपनी, आई हैव सोल्ड माय कंपनी टू यू. सो माय क्वेरी इज डिमांड pertaining to a transaction before 28 June. If this demand comes, let's say after 2 years, who is liable? Who is liable to pay tax to the government? Who is liable to pay tax? अभिषेक और मिस्टर एक्स. एक कंपनी तो हो गया, कंपनी तो पे करेगा ही. अभिषेक और मिस्टर एक्स. अभिषेक, ओके. सो अब 2 साल पहले आपने अभिषेक से कंपनी खरीदा था. नाउ अभिषेक माइट नॉट बी ट्रेसेबल, अभिषेक माइट नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू. देन तब कौन करेगा? If Abhishek is not traceable, then the department will collect the tax from whom? So यहां पर इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है, राइट? एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? टॉपिक इजी है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट? टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, both the taxable person, transferor, as well as the transferee are jointly and severally liable. Tax could be determined before or after the transfer. And आप और मैं दोनों लायबल हैं, राइट? और मैं कुछ भी कर सकता हूं कंपनी में, तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशन बिफोर यू वांट टू परचेज माय कंपनी. सेकंड, मैं कहीं भाग गया, मैं शिफ्ट हो गया लंदन, गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रेस मी, गवर्नमेंट कैन नॉट रीच मी, यू आर लायबल टू पे, right? Important. So sorry. Second, agent and principal. Agent as well as principal, both are jointly and severally liable. Company in liquidation, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है. सो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? एनी टैक्स ड्यू, whether determined before, after, or during the course of liquidation of the company, if cannot be recovered from the company, then every person who was director of the company at the relevant time shall be jointly and severally liable. Very specific, very specific. Directors of a private company, where tax dues of the private company cannot be recovered from the company, then every person who was a director of the company at the relevant time shall be jointly and severally liable. Partners of the firm, partners of the dissolved firm, firm as well as partners are jointly and severally liable. Every person who was partner at relevant time is jointly and severally liable. And guardian or trustees, where business is carried on by a person on behalf of a minor, in case of tax dues, the same may be recovered from the minor. Okay. Relevant time means जो ट्रांजेक्शन जिस टाइम में हुआ. सो लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 17-18 और लेटर पार्ट ऑफ द 17-18, तो उस दौरान पार्टनर कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम, राइट? सो दैट इज रेलेवेंट टाइम. So now we are discussing all that things. If in detail, if you want, we can discuss or we can skip. Only couple of things I have to mention is, every now and then cases of shell companies are coming to light where peons etc are made directors. How the tax is recovered? Sir,
अपने बात करते हैं, 2 मिनट दीजिए, मेरे पास प्रैक्टिकल और मजेदार केसेस आ रहे हैं. सो something of fake invoice, something of peons are directors, a driver's son who never left Bihar is a director of a 500 crore company in Delhi. So all these are coming, right? All these are coming. So इसलिए तो आता है ना कि टैक्स ब्रैकेट का वो खुलासा एंड ऑल दैट स्टफ्स. सो यस, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि वो डिमांड कैसे होगी, राइट? वो अब हाउ कैन दैट पर्सन बी liable and how can that he meet the liabilities? So that is still a question. Sir, you are a senior, very senior member to the profession. uh, that was always a question in the income tax background also. So it's nothing new to the GST era. That was always a question of income tax background also. So that have to go unanswered. So I will just discuss couple of things which have to be taken care of, or reference has to be can be taken. So friends, I am skipping this because whatever we discuss in a small table, उसी के बारे में elaborate discussions यहाँ पर की हुई है. Nothing new, right? Nothing new. I just want to highlight a couple of things. I guess last slide, just one more. Okay, यहाँ पर मैं कर लूँ कि if a person liable to pay, X is liable to pay, he dies. If business continued after that, then legal representative have to pay the liabilities to the extent उसकी asset वैसेट जितनी value है. If business discontinued before or after the death, then legal representative liable. Liability to the extent again, जहाँ इतना state है. Liability to occur for amount determined before the death, though unpaid, or determined after the death. बट शो कॉज नहीं हो सकता. आप टैक्स डिटर्मिनेशन आगे पीछे कर सकते हो, आप मरने के बाद शो कॉज इशू नहीं कर सकते, राइट? जो हमने पहले कनेक्ट किया था. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 94 में एक्सप्लेनेशन में आई हैव फाउंड दिस LLP to be considered as a firm. LLP to be considered as a firm. If a senior person can guide us, the word for the purpose of this chapter they have written only, they have only limited this for the purpose of this chapter, right? But what I have read personally is Companies Act में body corporate defined है. उसमें कुछ ऐसा बोला हुआ नहीं कि LLP is a body corporate or not. And this is always a fight that LLP is a body corporate or not a body corporate. Stretching that fight to our reverse charge provisions, we don't know LLP is a body corporate or not. So security service given to a LLP is a reverse charge item or not. So taking from here, LLP is considered as a firm, as a partnership firm. So they have, yes, they have said with only purpose of this chapter only. But since no clarity is there anywhere else, I might go and take this from here that LLP is to be considered as a firm and not as a body corporate, and not as a body corporate. So, friends, I suppose I have completed